बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब एक्सप्रेस। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सबसे इजी, हेल्दी और स्मार्ट होने के लिए सबसे इजी रेसिपी खाने की और जो झटपट बन जाती है, चिकन लेटस रैप। चिकन के कीमे के लेटस के अंदर कोई बन नहीं, कोई ब्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं, लेटस के अंदर रैप बनाएंगे इसको सिंपल। वो थोड़े से ऑयल में, ऑलिव ऑयल में बेशक बनाएं इसको। बेशक आप 2 चम्मच बिल्कुल ऑयल डालें, इनफ होता है इसके लिए। और इसको लेटस में खाएंगे, बिल्कुल भी ब्रेड के साथ नहीं खाएंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, थम्स अप का बटन दबाइए और कमेंट लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी, मुझे कमेंट लाजमी कीजिए। बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी नोट करते हैं। नोट कर लीजिए। 1 दरमियानी साइज की प्याज, 1 मीडियम अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, ऑयल तकरीबन 2 से 3 चम्मच, 2 और 3 स्पून्स, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, ताज़ा हरा धनिया, जिंजर गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका विनेगर 2 टेबलस्पून, केचप 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक एज टेस्ट, क्यूमन पाउडर जीरे का पाउडर 1 टेबलस्पून, क्रश रेड चिली दरदरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और ये कीमा है 1 किलो, चिकन मिंस 1 kg, half pound। I got the pan, oil, heat up the oil first। पहले तेल को गरम कर लीजिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा। Let it cook until it changes the color, and then we will put rest of the ingredient. और होने दें। साथ ही आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट इन इट। मिक्स इट वेल, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। Okay, when the water will be dry, I'll get back to you, okay? पानी जब खुश्क हो जाएगा इसका तो फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे दिखता है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, water is almost dry. Now let's put the ingredients in. Vinegar, chili garlic sauce,
केचप, क्रश रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स cumin पाउडर, जीरे का पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। Onion, fresh coriander, ताज़ा हरा धनिया, You can add or decrease spices according to your taste. आप मिर्च मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक हल्का या ज़्यादा कर सकते हैं। It's ready. The filling is ready. फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे लेटस रैप में सर्व करेंगे।